एजुकेशन अगेन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि अपने सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, so simply we'll go to the start menu, we'll type command prompt and we will type there python dash dash version. If you will write this command in command prompt, it will show you your Python version. Right now it's not installed in my system, so we will install. We are having two ways to install Python in a system. One is you can simply type Python command Python here in the command prompt. When type करोगे जैसे ही Python command, it will redirect you to Microsoft Store. Okay, internet is required for this. Okay, and the second is, as you can see, is redirect to your Microsoft Store. Okay, so it will show you the Python library and all. Right now my internet connection is slow, so okay. And the second way is, I'll show you this also. Second way is go to your browser, new tab, and search for Python. When you search for the Python, there is a welcome to python.org and www.python.org. This is the official website. Click on this website. When you will click on this website, it will redirect you to the official page to download your Python. Okay, and this you are having this download tab, and we are having option called Windows. Okay, and here is the option called Python Install Manager, and or get the standalone installer for Python. This is the latest version 3.141.5. अगर आप चाहते हो कि इसके पुराने वर्जन भी आप डाउनलोड करो, लाइक सपोज कि कुछ बच्चे अगर यूज करते हैं विंडोज 7 को एंड ये वाला वर्जन सपोर्ट नहीं कर देगा उनके सिस्टम में, तो यू कैन गो विद द व्यू द फुल लिस्ट. ओके, एंड हियर विल सी द ऑल प्री रिलीजेस करके कब रिलीज हुआ, तो सारे के सारे वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे. लाइक सी इफ यू सी द फर्स्ट वर्जन हियर in 2001 Python 2.0.1. okay, June 2001. okay, उसके अलावा भी बहुत सारे ओल्डर रिलीजेस आपको जो भी डाउनलोड करना है यहाँ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द पाइथन इंस्टॉल मैनेजर. लेट मी क्लोज दिस. ओके, एंड लेट मी डाउनलोड दिस. ओके, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर. सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग. इट्स अराउंड 44 MB. ओके, जब तक हम देख लेते हैं 44 MB का है. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर यही आप चाहते हो मैक ओएस के लिए, क्लिक ऑन द मैक ओएस. ओके, और इसी तरीके से आपको मैक इंस्टॉलर मिल जाएंगे, सारे वर्जन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. इफ यू आर वांट टू डाउनलोड फॉर अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, you can do for Linux operating systems also. Okay, so this is the Python official website. From there you can download your Python software. Okay, this is freeware. Okay, open source. And let the download our software and I'll be back. Okay, let me download this. Okay, so as you can see, this is downloaded Python Manager 26.2. okay, the date is 17/5 today. Okay, let the open this Python Manager. Double click on this file. Okay, double click on this file, click on the install Python. Okay, it will start installing in your system. It depends on your system speed, it will install. Okay, and now you can see the updating system. Just click on Y. Okay, it's asking for a Windows not configured to allow path longer than 260 characters, so it's asking to for your path. Just click on Y. Okay, and we can add the directory, and your directory will be C users, your computer name, app data folder, local, Python, and bin will be your path now. Okay, just click on yes, Y, and press enter. And now it's asking for you do not have the latest Python runtime, so install the current latest version of C Python. If not, you can install the default letter to install. Okay, so if you want to install latest one, just click on Y and it will start downloading again. Okay, and as you can see that it's starting extracting the files. Okay, the latest version of your runtime. Okay, now it's downloaded. Just click on yes again, and now it's done. Okay, so this is the using Python how to use in Windows. It will show you this document page. Okay, now back to the command prompt, and if you type here now Python dash version, it will show you the Python version. Okay, Python 3.14.5 जो हमने डाउनलोड किया था वो वर्जन अपने पास में आ गया. If you type Python here right now, it will show you this like this. Before it was redirecting to the Windows
Microsoft Store. Okay, but right now I'm showing this. Okay, so in this way this is the confirmation like आपकी Python जो है वो क्या हो गया, इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है. Okay, now we are having default ideally. Okay, default IDE we are having with this Python जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले. So let's begin with the first program. How we'll write the first program in this. Okay, so I hope you know कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है. It's very quite simple. ठीक है, चलो सर्च करते हैं in the search box ideally and you will see this ideally Python 3.14. Just open this IDE. Okay, integrated development environment, and you will see this shell. Okay, this shell is like a calculator like this. Okay, and if you want to write a big program, it's quite easy. Go to file tab, take on go to the new file, and you can write your program. Okay, so first of all, if we talk about Python, why we are using Python is because Python is a easy language. First of all, okay, why we are using Python? It's quite simple. Okay, it's easy. Okay, it's powerful. Okay, it's versatile. Okay, in demand language. Okay, and it's beginner friendly. Okay, so it's very quite simple कि हम Python की यूज करें. easy है, powerful है, versatile है, in demand है मार्केट के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि beginner friendly. जो भी इसका लाइक इंग्लिश सेंटेक्स की तरह होता है, सेंटेंस की तरह होता है, ये कहाँ का काम आती है. लाइक वी आर हैविंग डिफरेंट मॉड्यूल्स. ओके, लाइक सपोज वेब डेवलपमेंट के अंदर जा रहे हो, देयर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स लाइक Django and Flask. Okay, artificial intelligence, machine learning के अंदर TensorFlow है, PyTorch है. In the data analysis like Pandas, NumPy, Matplotlib. Okay, in automation like sending emails, renaming files, web scraping, report generation, and there are lots of things. And there are lots of big companies using like Google. Okay, Google is using, Netflix is using. Okay, Instagram is using. Okay, and Spotify, and there are lots of big companies are using Python right now in today's world. Okay, and Python has like lots of tutorials. Okay, free courses available on the internet, community support, thousands of libraries available. Okay, and for if you are a student, it's good for student beginners because easy syntax होते हैं, beginner friendly है, useful in real world projects, part of many CBSE and university syllabus. Okay, so there are lots of benefits you to learn this language. Okay, and if you talk about career opportunity, इसके बाद आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, it's quite बहुत सिंपल है. Software developer, data analyst, AI engineer, web developer, automation engineer, and there are lots of things you can. So धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है. Okay, so let's type our first program in this shell. Print is a function. Okay, इसको यूज करते हैं, हम सीखेंगे कि print क्या है, क्यों है. जैसे let's suppose I'm writing print hello world. बस इतना सा प्रोग्राम है और आपका आउटपुट रेडी है. दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम यू कैन लाइक आपने लिख दिया, फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया पाइथन के अंदर. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन डाउनलोड, यू कैन रन. ओके, यू कैन यूज दिस लैंग्वेज. ओके, इट्स क्वाइट सिंपल. आई होप आपके समझ को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है इसके वर्जन को. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए. लास्ट जो वीडियो था अपना सिलेबस वाला, उसको भी एक बार जाके आप जरूर देखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.